Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So you can read these 6 verses and then we can chant 277. तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला अध्याय 9 के 271 से लेकर 276 श्लोकों का पहले अनुवाद पढ़ेंगे, फिर 277 श्लोक बोर्ड पर है उसे दोहराएंगे। 271 प्यार का अनुवाद इस प्रकार है। भक्तगण मुक्ति तथा सकाम कर्म इन दोनों का परित्याग करते हैं। आप इन्हें ही जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। 272 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादी आचार्य से कहते रहे, आप मुझे सन्यासी वेश में देखकर मेरे साथ कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। आपने विधि तथा साधन तथा चरम लक्ष्य साध्य का सही वर्णन नहीं किया है। 273 श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर तत्ववादी संप्रदाय का आचार्य अत्यधिक लज्जित हो गया। वैष्णव धर्म में श्री चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ श्रद्धा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। 274 तत्ववादी आचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कहा है वह सत्य है। यही सारे प्रामाणिक वैष्णव शास्त्रों का निर्णय है। 275 तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। 276 श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिखते हैं। Sabek guna dekhi tomar sampradaya. Sabek guna dekhi tomar sampradaya. Satya vigrah karishvare karaha nishaya. Satya vigrah karishvare karaha nishaya. Sabek guna dekhi tamara sampradaya. Satya vigrah karishvare karaha nishaya. Please chant. तोमार संप्रदाय सत्यकारी ईश्वर कारा निश्चय Translation. अनुवाद। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वह यही है कि आप लोग भगवान के अर्चा विग्रह को सत्य रूप मानते हैं। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय के तत्ववादी आचार्य को यह बता देना चाहा कि उनका सामान्य आचरण शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसे सकाम कर्म तथा ज्ञान के कलमश से रहित होना चाहिए। जहां तक सकाम कर्म की बात है, यह कलमश
जीवन के उच्चतर स्तर तक ऊपर उठने की इच्छा करना है और ज्ञान का कल्मश परम सत्य में विलीन हो जाने की इच्छा करना है। मध्वाचार्य का तत्ववादी संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को मानता है जिसमें सकाम कर्म निहित होता है। उनका चरम लक्ष्य मुक्ति मात्र एक प्रकार की भौतिक इच्छा है। शुद्ध भक्त को सभी तरह की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वह केवल कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। तो भी चैतन्य महाप्रभु को इस बात की प्रसन्नता थी कि मध्वाचार्य संप्रदाय अथवा तत्ववाद संप्रदाय भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करता है। यह वैष्णव संप्रदायों की सबसे बड़ी विशेषता है। यह तो मायावाद संप्रदाय ही है जो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई वैष्णव संप्रदाय भी इस निर्विशेष प्रवृत्ति में बह जाता है तो उस संप्रदाय का कोई स्थान नहीं होता। यह तथ्य है कि ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जिनका चरम लक्ष्य भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना होता है। उदाहरण के लिए सहजिया वैष्णव दर्शन भगवान से तादात्म्य चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि श्री माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य को इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका संप्रदाय भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करता है। Omagyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stabitam Yena Bhuttare Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gura Shri Yuta Padakamalan Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sagana Lalita Shri Shakanvitam Sham He Krishna Karuna Sindha Dinabandha Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarumyascha Kripa Sindhumya Evacha Pajitanam Vavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this discussion between Lord Chaitanya and Tattvavadis. यहाँ पर यह जो चर्चा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु और तत्ववादियों के बीच में है। And Lord Chaitanya, he found great asset in Tattvavada philosophy. और श्री चैतन्य महाप्रभु को कई अमूल्य चीजें दिखी तत्ववादी दर्शन में। What was this asset? तत्ववादी दर्शन की क्या अमूल्य चीजें थी? Yes, they are accepting that the Lord has a transcendental form. Because Mayavadis, they are not accepting the transcendental form of the Lord. They are saying that when Lord descends to material world, he is accepting material form. मायावादी कहते हैं कि जब परम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो
भौतिक जगत भौतिक तत्वों का रूप धारण कर लेते हैं. And they are saying that actually Supreme Truth, it does not have hands, does not have legs, does not have eyes. और वो कहते हैं कि परम सत्य के कोई पैर, हाथ या आंखें नहीं हैं. So they are considered great offenders. और इसीलिए उन्हें बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है. And in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Aruhya Krishna param padam tata patantya do nadrita yushmat angraya. Because they are not accepting the shelter of the lotus feet of the Lord, they are falling down to the material world. और इसीलिए भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि ऐसे मायावादी जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, वो पुनः गिर जाते हैं इस भौतिक जगत में. So it is very important to understand that the Lord has transcendental form. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समझा जाए कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है. That's why Madhavendra Puri has accepted Tattvavada Sampradaya. और क्योंकि तत्ववादी दर्शन में यह विशेषता है कि वो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं, इसलिए माधवेंद्र पुरी ने भी मध्वाचार्य संप्रदाय को स्वीकार किया. Because they are accepting the transcendental form of the Lord. क्योंकि मध्वाचार्य संप्रदाय भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करता है. And there are many so-called Vaishnavas. Their goal is to merge into existence of the Lord. और कई तथाकथित वैष्णव भी हैं जिनका लक्ष्य होता है भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना. Srila Prabhupada is calling them Sahajas. प्रभुपाद उन्हें सहजिया बताते हैं. And there are many other apasampradayas. और कई अन्य भी अपसंप्रदाय हैं. When Bhaktivinoda Thakur was investigating these apasampradayas, he found something like 12 apasampradayas. तो जब भक्तिविनोद ठाकुर यह खोज कर रहे थे कि कितने अपसंप्रदाय हैं, तो उन्हें लगभग 12 अपसंप्रदाय मिले. And they have so many mistakes in their philosophy. और उसमें अनेक उनके दर्शन में अनेक त्रुटियां हैं. So we have to study very nicely Vaishnava philosophy. इसलिए हमें वैष्णव सिद्धांत को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है. And according to the definition of a pure devotional service that is given in Bhakti Rasamrita Sindhu, pure devotional service should not be mixed with karma and jnana. जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है कि शुद्ध भक्ति कभी कर्म और ज्ञान का मिश्रण शुद्ध भक्ति में नहीं होता है. But Tattvavada Sampradaya is accepting Varnashrama Dharma as one of the major principles. लेकिन तत्ववादी संप्रदाय में यह त्रुटि थी कि वो वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को बहुत ही मुख्य मानते थे. And Srila Prabhupada is saying Varnashrama Dharma involves fruitive activity. और श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में एक मुख्य चीज होती है कि उसमें सकाम कर्म निहित होता है. So it's contradicting the pure devotional service. और इसीलिए यह सकाम कर्म निहित होने की वजह से ही यह शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है. And also the ultimate goal of Tattvavada Sampradaya is mukti. और तत्ववादी संप्रदाय का चरम लक्ष्य भी मुक्ति होता है. And Srila Prabhupada is saying that it is the form of a material desire. और श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा होना भी एक भौतिक इच्छा है. Because when one wants to attain mukti, he just wants to get rid of material suffering. क्योंकि मुक्ति की इच्छा रखना यह भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के समान है. यह भी भौतिक इच्छा है. Material existence involves many types of sufferings. क्योंकि भौतिक जीवन बहुत सारे कष्टों के साथ होता है. There is suffering from other living entities. भौतिक जीवन में अन्य जीवों से भी कष्ट आता है, क्लेश आता है. There is suffering from the higher sources, from demigods. और अन्य देवी देवताओं से भी दैविक कलेश भी आते हैं जीवन में.
And there is a suffering from our own mind. और अपने मन से शरीर से भी दुख होता है। So material existence is full of suffering. इसलिए जो भौतिक अस्तित्व है, भौतिक जीवन, यह दुखों से भरा है। And Lord Krishna is saying, Dukkhalayam ashashvatam, it's full of miseries. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है, यह पूरी तरह से दुख से भरा हुआ है। So material existence is very painful. इसलिए भौतिक अस्तित्व बहुत ही दर्दनाक है। And the person who does not have real knowledge, after so much suffering, he wants to just get rid of this suffering. और जिस व्यक्ति के पास सही ज्ञान नहीं है, वह इन सारे दुखों को झेलने के बाद इनसे छुटकारा पाना चाहता है। And Srila Prabhupada is saying it's just another material desire. और इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक कष्टों से छुटकारा पाने की इच्छा होना या मुक्ति की इच्छा होना भी एक अन्य प्रकार की भौतिक इच्छा ही है। The real goal of spiritual life is to satisfy Krishna. जीवन का या भक्ति का परम लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। And if one is able to satisfy Lord Krishna, he will get the greatest bliss. और अगर कोई अपने जीवन में भगवान को संतुष्ट कर पाता है तो उसे परम आनंद प्राप्त होगा। And this bliss is so big that any other suffering becomes very small in comparison with this bliss. और यह परम आनंद इतना विशाल होता है कि उसके समक्ष कोई भी दुख बहुत ही सूक्ष्म होता है। It is said in the Bhakti Ratnakar Sindhu that material happiness is just like water in the hoofprint of a calf in comparison with the great ocean of bliss we can get from devotional service. भक्ति रसामृत सिंधु में यह वर्णन आता है कि भौतिक जगत का जो दुख है वो एक बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उसके समान है। और जो भौतिक जो आध्यात्मिक आनंद है वो एक समुद्र के समान है। So it's very insignificant. और इसीलिए बहुत ही सूक्ष्म है जो इस भौतिक जगत का दुख। But when we are living in the material world, we are considering it's a great asset to have some material enjoyment. क्षमा कीजिएगा, भौतिक जगत का आनंद जो है वो तुलना की गई है कि वो एक बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उसके समान है। और कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भौतिक आनंद ही सब कुछ है। And everyone in the material world is working very hard to get this material enjoyment. और भौतिकतावादी व्यक्ति बहुत ही कठोर परिश्रम करता है भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए। So they are spending whole life just for the hard work. इसीलिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है इस कठोर परिश्रम में, इस भौतिक आनंद को प्राप्त करने में। And what is the result of this hard work? और इसका क्या परिणाम होता है इस कठोर परिश्रम का? They are getting this insignificant material enjoyment. और इन्हें बहुत ही सूक्ष्म यह भौतिक आनंद प्राप्त होता है। And sometimes they are not getting this enjoyment. और कई बार तो वो भौतिक आनंद भी नहीं मिलता है। And it's very common that one cannot get this material enjoyment. और ये बहुत ही सामान्य बात है कि किसी को भौतिक आनंद भी ना मिले। So after this very hard work, they are just getting another suffering. इसीलिए इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी किसी को कष्ट ही प्राप्त होते हैं। And they are becoming frustrated. और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। So if the person is materialistic, at the end of his life, he is completely frustrated. और इसीलिए अगर कोई सिर्फ भौतिकतावादी है कोई व्यक्ति तो अंत में जीवन के अंत में वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। So one was working so hard for his whole life and he is cheated. और उसने पूरा जीवन ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति ने पूरा जीवन इतना कठोर परिश्रम किया लेकिन अंत में उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हो गया। Wherever we go, we can see these big billboards of advertisement. हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम बड़े-बड़े विज्ञापन के ये बोर्ड्स देखते हैं। If you will get this phone, you will become happy. तो उन बोर्ड्स पर लिखा
हो जाएंगे। If you will get this car, fancy car, you will become happy. उसमें उन विज्ञापनों में होता है कि अगर आपको यह इतनी सुंदर कार प्राप्त होगी तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। If you will get this fancy dress, you will become happy. अगर आपके पास यह सुंदर वस्त्र होंगे तो आप बहुत आनंद में होंगे। So these people, they are working very hard to get all this. तो इसीलिए लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। And they are getting this iPhone 7, iPhone 8, and for maybe one day they are becoming happy. तो इसीलिए लोग इतना कठोर परिश्रम करके आईफोन 7, आईफोन 8 लेते हैं और सोचते हैं कि हम जरूर एक न एक दिन बहुत प्रसन्न होंगे। But after some time there is no more happiness from this iPhone. लेकिन कुछ ही समय में इन्हीं आईफोन से आनंद प्राप्त होना बंद हो जाता है। And they are very frustrated. और फिर उन्हें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है। They were working so hard to get this phone. उन्होंने इतना कठोर परिश्रम किया इस फोन को प्राप्त करने के लिए। Because it's very expensive. क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होता है। When new iPhone is coming, it's like 100,000 rupees for one piece. जब नया कोई फोन आता है तो वो 1 लाख रुपए तक होता है। So it's very hard work needed to get this iPhone. इसीलिए ऐसे फोन को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। But the happiness is very insignificant. लेकिन उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। For a few days one is very proud that I got the latest phone. कुछ दिनों तक जरूर व्यक्ति गर्वित रहता है कि मेरे पास ये सबसे नया फोन है। But then new one is coming and so one is frustrated, I don't have it. लेकिन कुछ ही समय में कंपनी नया फोन निकाल देती है तो व्यक्ति को फिर लगता है कि वो मेरे पास तो नया फोन नहीं है। So dukkhalayam ashashvatam, this material happiness does not last so long. और इसलिए दुखालयम अशाश्वतम होने की वजह से ये जो भौतिक आनंद है ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। So the result of this hard work is only frustration. इसलिए इतने कठोर परिश्रम का भी परिणाम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होता है। So all the scriptures are saying that we should not strive for material happiness. इसीलिए सभी शास्त्र कह रहे हैं कि हमें भौतिक सुख के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। We should strive for the happiness which cannot be obtained in this material world. हमें उस सुख के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो भौतिक जगत में प्राप्त नहीं होती है। And in order to get this real happiness, we should perform devotional service. और यह वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। We should try to bring happiness to the Supreme Personality of Godhead. हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। And we should study this process under the guidance of a spiritual master. और हमें गुरु के मार्ग निर्देशन में इस विधि का पालन करना चाहिए। Because it's not so easy to bring satisfaction for the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि यह बहुत आसान नहीं, क्योंकि भगवान को आनंद देना है, भगवान को संतुष्ट करना आसान नहीं है। Because Supreme Lord, He is Aptakama and Atmarama. He does not need anything. He is completely satisfied with Himself. क्योंकि भगवान आत्माराम है, अप्तकाम है, वो अपने में ही संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। It's not so difficult to satisfy some material person. किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को संतुष्ट करना बहुत ही सरल है। Because he has some desire, and if you fulfill his desire, he will be happy. क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा होती है और अगर आप उस इच्छा को पूरा कर देते हैं तो वो संतुष्ट होता है। But Krishna, he does not have any material desires. लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तो कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। So it's very difficult to satisfy him. इसलिए ये बहुत कठिन है कि उन्हें संतुष्ट किया जा सके। Because he has only transcendental desires. भगवान की सिर्फ दिव्य इच्छाएं हैं। And only his pure devotees, they know how to satisfy him. और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही जानते हैं कि उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए। So if we would serve pure devotees, we can get this secret how to satisfy Krishna. और अगर
हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो हम भी ये रहस्य जान सकते हैं कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए। Otherwise, we would never be able to satisfy Krishna. अन्यथा हम कभी भी सफल नहीं होंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। There are many people that are saying, I am devotee of Krishna. कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। But if they are not serving devotees of Krishna, they would never be able to satisfy Krishna. लेकिन अगर वो भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कभी भी भगवान को नहीं संतुष्ट कर सकेंगे। That's why in Adi Purana, Krishna says to Arjuna that if someone saying that he is my devotee, he is not my devotee. इसलिए आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि वो मेरा भक्त है तो वो मेरा भक्त नहीं है। But if one is serving my devotee, he is really my devotee. और फिर भगवान आगे कहते हैं लेकिन अगर कोई मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है तो वो मेरा भक्त है। So this is a secret of Bhakti Yoga, इसलिए यह भक्ति योग का रहस्य है that we should serve Krishna's devotees. कि हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। Then this is the only way how we can satisfy Krishna. और सिर्फ यही तरीका है जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। So we should find out who is devotee of Krishna. इसलिए हमें यह ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि कौन भगवान के भक्त हैं। When Mother Devahuti, she asked Lord Kapiladev, how I am a simple woman, how can I serve the Supreme Personality of Godhead? माता देवहूति ने भगवान कपिल से यह जिज्ञासा की थी कि मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकती हूँ? And Lord Kapiladev said, you should take shelter of a pure devotee. तब भगवान कपिल ने उत्तर दिया कि आपको एक अशुद्ध भक्त को संतुष्ट करना चाहिए। So Mother Devahuti, she asked, how can I recognize who is pure devotee? तब माता देवहूति ने यह जिज्ञासा की कि मैं कैसे जानूंगी कि कौन भगवान का शुद्ध भक्त है? And Lord Kapiladev, he gave very nice explanation who is a devotee of Krishna. और तब भगवान कपिल ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि कौन भगवान का शुद्ध भक्त है। What he said, उन्होंने क्या कहा? who read the third canto of Srimad Bhagavatam, Titikshava Karunika Surida Sarva Dehinam Majata Shatrava Shanta Saddhava Sadhu Bhushana. So he described the qualities of a devotee. तब भगवान कपिल ने एक शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन किया। And first quality is Titikshava. तो पहला गुण है कि वो तितिक्षवा है, शुद्ध भक्त। Yes, devotee is very tolerant. एक भक्त बहुत ही सहनशील होता है। Because when we are performing devotional service, we would meet many obstacles. क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हम कई सारी रुकावटों का सामना करते हैं। Sometimes we have enthusiasm, sometimes we don't have. कई बार हम में उत्साह होता है, कई बार हमें उत्साह नहीं होता है। And many other obstacles will come. और कई अन्य रुकावटें भी आएंगी। So we have to be very tolerant to perform devotional service. तो इसीलिए हमें बहुत सहनशील रहना पड़ेगा भक्ति करते हुए। Next quality is Karunika. दूसरा जो गुण है वो है कारुणिका। Because devotee, he is feeling so much happiness in devotional service. He is very, when he sees other persons who don't have this happiness, he becomes very karunika. जब भक्त जो इतने भक्ति करने से इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जब वो देखता है कि अन्य लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके पास यह आनंद नहीं है, तो फिर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। This compassion is very natural. यह करुणा बहुत ही स्वाभाविक है। When you have so much happiness, you are very compassionate to those who don't have this happiness. जब आपके पास यह बहुत सुख होता है तो आप स्वतः ही करुणावश हो जाते हैं जिनके पास करुणा नहीं, जिनके पास यह आनंद नहीं है। Next quality is Surida Sarvadehina. तीसरा जो गुण है सुहृद सर्वदेहिना। He is best friend of all living entities. जो शुद्ध भक्त होता है वो सभी जीवों का परम मित्र होता है।
Because devotee, he wants, जो शुद्ध भक्त होता है वो सभी को सुख देना चाहता है, so he is considered the best friend. इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। Ajata Shatru is the next quality. He does not consider anybody as his enemy. चौथा जो गुण है अजात शत्रु है, अर्थात वो किसी शुद्ध भक्त किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। Even somebody is coming to kill him, he does not consider his enemy. यहाँ तक कि कोई अगर शुद्ध भक्त को मारने का भी प्रयास करता है तो भी उसे शुद्ध भक्त अपना शत्रु नहीं मानता है। Whatever happens to a devotee, he considers it's mercy of Krishna. जो भी भक्त के साथ होता है वो उसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। There was one king and he has minister. एक समय एक राजा थे और उनके कई मंत्री थे। And the minister was always saying, "This is the mercy of Krishna." और एक मंत्री थे जो कहते थे कि यह हमेशा कहा करते थे कि यह भगवान की कृपा है। And one day the king lost his finger. और एक दिन राजा की अंगुली कट गई। And the minister said, "Oh, it's the mercy of Krishna." और तब मंत्री ने कहा कि यह भगवान की कृपा है। And the king, he was very offended. He considered it's very bad, and so he put his minister into jail. और यह बात राजा को बहुत ही बुरी लगी, तो राजा ने उस मंत्री को जेल में डाल दिया। Then after a few days, the king went hunting into forest. और कुछ दिनों के बाद में राजा शिकार के लिए जंगल में गए। And he was caught by dacoits. और कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। These dacoits, they were worshipping goddess Durga. और ये जो डाकू थे ये दुर्गा देवी की पूजा कर रहे थे। And they wanted to offer this king as an offering to this goddess. और वो दुर्गा माता को यह भेंट इस राजा को एक भेंट के रूप में चढ़ाना चाहते थे। And they brought him before the goddess. और वो राजा को दुर्गा देवी के सामने लाए। And because they wanted to offer him, they started to wash him. और क्योंकि वो उसे भेंट करना चाहते थे तो पहले राजा की धुलाई करने लगे। Dress him nicely. उसे बहुत ही अच्छे से वस्त्र पहनाए। But they found that he does not have a finger. लेकिन उन डाकुओं को पता लगा कि इस राजा की एक अंगुली नहीं है। So it was not fit to be offered if one does not have a finger, cannot be offered to the goddess. और फिर उन्हें लगा कि ये तो दुर्गा देवी को भेंट नहीं किए जा सकते क्योंकि इनकी एक अंगुली नहीं है। So they just throw him into the forest. उन्होंने वापस डाकुओं ने राजा को जंगल में फेंक दिया। And when the king came back to his palace, और जब राजा वापस अपने महल में आए, he released his minister from the jail. और उन्होंने अपने मंत्री को जेल से छुड़ा दिया। And he said, "Now I can understand. That was the mercy of Krishna when I lost this finger." जब राजा ने उस मंत्री से कहा कि अब मुझे समझ में आया कि मेरी जो अंगुली कटी थी वो कैसे भगवान की कृपा ही थी। But I cannot understand what was the mercy of Krishna that I put you into jail. लेकिन मुझे यह नहीं बात समझ आ रही है कि भगवान की ये क्या कृपा है कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। The minister said, "It's very simple. मंत्री ने कहा यह भी बहुत सरल है। If you would not put me into jail, I would go with you for hunting." तो मंत्री ने कहा कि अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर गया होता। And that these dacoits, they would offer me to the goddess and they would kill me. तो उन डाकुओं ने आपके स्थान पे मुझे बलि चढ़ा दिया होता। So it was the mercy of Krishna that you put me in the jail. इसलिए यह भगवान की कृपा ही थी कि आपने मुझे जेल में डाल दिया। So devotee, he considers everything the mercy of Krishna. इसलिए भक्त हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में ही देखता है। Even if somebody is beating a devotee, he considers, "Oh, it's mercy of Krishna." यहाँ तक कि अगर कोई भक्त की पिटाई भी करता है तो भक्त यही देखता है कि यह भगवान की कृपा ही है। In my last life, I committed some sin, so now just some reaction is coming.
तो भक्त सोचता है कि जरूर मैंने पिछले जन्मों में कुछ पाप कर्म किए होंगे जिसकी प्रतिक्रिया अब मुझे मिल रही है. And maybe because of my sins I had to be killed. यहाँ तक कि हो सकता था कि मेरे पापों की वजह से मेरी मृत्यु होनी थी. But now I am just got some little punishment. लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत ही छोटा सा दंड मिला है. So devotee is very happy in every situation. इसलिए भक्त हर स्थिति में बहुत प्रसन्न होता है. So there is a elaborate description of the qualities of devotee in third canto. तो इसलिए तीसरे स्कंद में भक्त के गुणों की चर्चा की गई है. So if we want to satisfy Krishna, we have to find pure devotee. इसलिए अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को संतुष्ट करना है, तो हमें भी एक शुद्ध भक्त ढूंढना होगा. We should accept him as our spiritual master. फिर उस शुद्ध भक्त को हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा. And we should serve under his guidance. और उनके मार्गनिर्देशन में भक्ति सेवा करनी होगी. Only in this way we can satisfy Krishna. सिर्फ यही तरीका है जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं. There is no other way. अन्य कोई रास्ता नहीं है. So if you have any questions. किन्हीं के कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? Yes. Hare Krishna. Thank you for the class. Tattvavadis and Brahmavadis are both the same. No. Brahmavadis and Tattvavadis, there is a difference. प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या तत्ववादी और ब्रह्मवादी एक ही हैं? महाराज बता रहे हैं नहीं, दोनों भिन्न हैं. Brahmavadis, they are considering Brahman as a supreme. ब्रह्मवादी होते हैं, वो ब्रह्मन को सर्वोच्च मानते हैं. And Tattvavadis, they are accepting Krishna as a supreme. लेकिन तत्ववादी श्री कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं. So there is a difference. यही अंतर है. Maharaj, we hear the Sarajiyas, they like behave that they are associating with Krishna, and here we are hearing that they are trying to mix with the Lord. So how these two things are different? How their goal is different? There are many people who are performing, they are trying to do some devotional service, but their goal is to merge into the existence of the Lord. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ तत्ववादी भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान में ही विलीन होना चाहते हैं. सहजिया, कुछ सहजिया हैं जो कि सेवा भी करते हैं, लेकिन भगवान में विलीन होना चाहते हैं. तो ऐसा क्यों है? तो महाराज बता रहे हैं कि ऐसे कई भक्त होते हैं जो कि भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान में विलीन होना चाहते हैं. Even Mayavadis, they are doing deity worship. यहाँ तक कि मायावादी भी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं. They are chanting mantra. वो मंत्र का जप करते हैं. But their goal is to merge into existence of the Lord. लेकिन उनका लक्ष्य भगवान में विलीन होना होता है, ब्रह्मन में विलीन होना होता है. Many people were coming to Lord Chaitanya. कई लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आते थे. And one person came, he was always chanting Ram, Ram, Ram. एक व्यक्ति आए थे जो हर समय राम 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 का जप किया करते थे. And devotees, they brought him to Lord Chaitanya and they said, this is a great devotee. और भक्त उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गए और बताया कि ये बहुत बड़े भक्त हैं. He always chants the Lord's name. यह हर समय भगवान राम का नाम लेते रहते हैं. But Lord Chaitanya immediately understood his heart. In his heart he wanted to merge into existence of the Lord. लेकिन चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही उस व्यक्ति का हृदय समझ गए कि उस व्यक्ति के हृदय में भगवान में विलीन होने की इच्छा थी. So there are many people, they look like devotees. इसलिए कई लोग होते हैं जो भक्तों के जैसे दिखते हैं. They have same dress, same tilak. उनकी समान वेशभूषा होती है, समान तिलक लगाते हैं.
But their goal is to merge into existence of the Lord. लेकिन उनका लक्ष्य भगवान के अस्तित्व में विलीन होना होता है. So we cannot understand who is devotee just by external appearance. तो हम बाहरी रूप से, बाहरी वेशभूषा से यह नहीं पता लगा सकते कि कौन भक्त है. We have to understand what is there in their heart. हमें यह समझना होगा कि हृदय में क्या अभिलाषा है. So it takes time to understand who is devotee. इसलिए समय लगता है यह जानने में कि कौन भक्त है. You cannot understand it immediately. आप तुरंत नहीं समझ सकते इस चीज को. It is very difficult to understand Krishna and to satisfy Krishna, but to satisfy a materialistic is very easy. But we sometimes also listen that it is very easy to satisfy Krishna because he is all like Atmaram and can be satisfied even by a leaf, and even poorest man can satisfy the Lord. But a materialistic on the other side is a greedy person. If you satisfy him once, then he will again ask something else. Yes, there is no end to the material desires. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज ने प्रवचन में बताया कि भगवान को संतुष्ट करना कठिन है और एक भौतिकतावादी को संतुष्ट करना आसान है. उसकी भौतिक इच्छाएं होंगी, उनको पूरा कर दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएगा. लेकिन प्रभु जी का प्रश्न है, लेकिन हम कई बार ऐसा भी सुनते हैं कि एक भौतिकतावादी जिसकी इच्छाएं असीम हैं, उसे संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है. और भगवान तो बड़ी ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं. एक पत्र या पुष्प भी अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं. तो यह इसे कैसे समझा जाए? तो महाराज कह रहे हैं ये बात सही है कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं. So from one point of view it's easy to satisfy a materialistic person. You can just ask him what he wants. तो एक तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति को संतुष्ट करना इसलिए सरल है कि हम उससे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या भौतिक इच्छा है. Because usually one has some simple desire. और क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति की बहुत सरल सी इच्छाएं होती हैं. But he becomes satisfied just for a short time. लेकिन वो बहुत ही थोड़े समय के लिए संतुष्ट होता है. Because he has so many desires. क्योंकि उसकी फिर दोबारा अन्य इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं. He is never satisfied. इसलिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता. But when we are trying to satisfy Krishna, और जब हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, it is said patram pushpam talam tayam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktyuparitam ashnami prayatatmana. So there is only one thing that can satisfy Krishna, that is bhakti. तो सिर्फ एक चीज है जो भगवान को संतुष्ट कर सकती है और वो है भक्ति. When Krishna came to Hastinapur, जब भगवान हस्तिनापुर आए, Duryodhana wanted to feed him. दुर्योधन भगवान को भोजन कराना चाहते थे. He invited best cooks from all over. इसलिए दुर्योधन ने सर्वश्रेष्ठ जो रसोइया थे उनको पूरे जगत से बुलाया. And they have prepared hundreds of preparations. और उन्होंने कई सैकड़ों मिष्ठान बनाए. And Duryodhana was trying to invite Krishna to his home. और दुर्योधन ने प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने घर बुला सके. But Krishna even did not want to enter his house. लेकिन भगवान उसके घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहते थे. He went to a small hut of Vidura. भगवान जो विदुर थे उनके घर में चले गए, जो बहुत ही छोटा सा झोंपड़ी सा था. And Vidura had just few bananas. और विदुर के पास कुछ केले थे. But he was in a great ecstasy to see Krishna. लेकिन वो बहुत ही भाव की स्थिति में आ गए थे भगवान श्री कृष्ण को देखकर. And he was removing the skin from the bananas. और वो केले के छिलकों को उतार रहे थे. And instead of offering bananas, he was offering to Krishna this skin. और केले को भगवान को भेंट करने के बजाय वो केले के छिलकों को भेंट करने लगे. But because he has so much love, लेकिन क्योंकि विदुर का भगवान के प्रति इतना प्रेम था, Krishna was eating this skin. इसलिए भगवान श्री कृष्ण छिलकों को भी खा रहे थे. So if one has bhakti, it's very easy to satisfy Krishna. इसलिए अगर किसी के पास भक्ति है तो भगवान को संतुष्ट
संतुष्ट करना बहुत सरल है. But if one does not have bhakti, there is no way to satisfy Krishna. लेकिन अगर किसी के पास भक्ति नहीं है तो भगवान को संतुष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है. That's why it's very difficult to satisfy Krishna. इसलिए भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना बहुत कठिन है. You can bring the whole wealth of the world and offer to Krishna. आप पूरे विश्व की सामग्री भगवान के समक्ष ला सकते हैं और भेंट कर सकते हैं. You can bring gold, you can bring diamonds. आप सोना ला सकते हैं, हीरे जवाहरात ला सकते हैं. But if you does not have bhakti, Krishna will not accept it. लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे. So one has to approach a person who already has bhakti. इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसके पास पहले से ही भक्ति है. And if you will offer even a small gift to this person will offer it with love to Krishna. और इस ऐसे भक्त को अगर आप कुछ भी देंगे और वो भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे. Then your gift will be accepted. तब आपका उपहार भगवान स्वीकार कर लेंगे. That's why it is said that we have to approach a pure devotee. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें एक शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए. Because our bhakti is very small. क्योंकि हमारी भक्ति बहुत ही सूक्ष्म है. It's very difficult to satisfy Krishna with just small bhakti. इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उस छोटी सी भक्ति से संतुष्ट करना बहुत कठिन है. But if we are serving pure devotee, it becomes very easy. लेकिन अगर हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो यह आसान हो, भगवान को संतुष्ट करना आसान हो जाता है. That's why it's very important to approach pure devotee. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शुद्ध भक्त के पास जाया जाए. He has so much love for Krishna that Krishna accepting even banana skin from him. उनके पास भगवान के प्रति इतना अगाध प्रेम है कि भगवान उनसे केले के छिलके भी स्वीकार कर लेते हैं. Thank you, Maharaj, for the wonderful class, especially explaining pure devotional service. Maharaj, I wanted to ask about who are these Tattvadis, about which Tattvada is speaking, and what was this Tattvada philosophy given by Madhvacharya? Yes, Tattvada philosophy was given by Madhvacharya. प्रभु जी पहले महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज ने इतना अच्छे से समझाया और विशेषकर शुद्ध भक्ति के विषय में इतना अच्छे से समझाया. प्रभु जी को प्रश्न है कि ये तत्ववादी कौन है और क्या तत्ववाद दर्शन मध्वाचार्य जी द्वारा दिया गया है. महाराज बता रहे हैं हाँ, तत्ववाद दर्शन मध्वाचार्य द्वारा दिया गया है. It is described in these verses that we are following what was given by Madhvacharya. तो तत्ववादी इन प्यारों में वर्णन आता है कि तत्ववादी कह रहे हैं कि हम जो पालन करते हैं वो मध्वाचार्य जी द्वारा दिया गया है. But this philosophy is not complete. लेकिन यह दर्शन पूर्ण नहीं है. That's why when Lord Chaitanya came, he took all the important things from different sampradayas. इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने महत्वपूर्ण चीजों को इन संप्रदायों से ले लिया. Every Vaishnava sampradaya has its asset. हर वैष्णव संप्रदाय के अपने कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं. And Lord Chaitanya took all these assets together. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन महत्वपूर्ण गुणों को एक साथ किया. And he gave us complete philosophy. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें पूर्ण दर्शन दिया. Most perfect philosophy, achintya beda beda tattva. सबसे जो सही जो दर्शन है वो है अचिंत्य भेदा भेद दर्शन. That's why when Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, he established a temple in Mayapur. इसलिए जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मायापुर में जब मंदिर की स्थापना की, he established the deities of Gandharvika Giridhari. उन्होंने गंधर्विका गिरधारी जी के विग्रह की स्थापना की. And Lord Chaitanya. श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भी विग्रह स्थापित किए. And 4 acharyas around this temple. और इस मंदिर के चारों तरफ 4 संप्रदायों के आचार्यों को भी स्थापित किया.
because the philosophy of Lord Chaitanya unites all the assets of all sampradayas. क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सभी इन चार संप्रदायों के जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं उनको इकट्ठा करता है. But if we would analyze the philosophy of all the sampradayas, we could find that they are incomplete. लेकिन अगर हम इन चारों संप्रदायों का विश्लेषण करें इनके दर्शन का तो हम पाएंगे कि ये चारों दर्शन अपूर्ण हैं. Only Achintya Bheda Abheda Tattva is given perfect philosophy. सिर्फ अचिंत्य भेदा भेद दर्शन ही पूर्ण दर्शन देता है. Yes. It appears that the parampara we are following Shri Chaitanya Mahaprabhu. So there, it's not exactly same as Madhvacharya Sampradaya. So why is that Lord Chaitanya still? He didn't say it is a new Sampradaya, fifth Sampradaya. It's still called part of Madhva Sampradaya. Why is that? Yes, he accepted initiation from Ishvara Puri. Ishvara Puri accepted initiation from Madhavendra Puri, and so on. It goes on to Madhvacharya. प्रभु जी का प्रश्न है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मध्वाचार्य संप्रदाय में कमी है तो भी उन्होंने एक पांचवें संप्रदाय को क्यों नहीं स्थापित किया और मध्वाचार्य संप्रदाय को ही क्यों स्वीकार किया. तो महाराज कह रहे हैं हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली और ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी जी से, और यह इस प्रकार मध्वाचार्य जी तक यह कनेक्शन है. But Lord Chaitanya, he gave us most perfect philosophy. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत ही सही दर्शन दिया है. Because that philosophy was not complete. क्योंकि वह जो पहले जो मध्वाचार्य संप्रदाय का जो दर्शन सिद्धांत था वो पूर्ण नहीं था. Their goal was mukti. उनका जो लक्ष्य था वो मुक्ति था. But Lord Chaitanya gave us another goal, bhakti. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य लक्ष्य दिया जो है भक्ति. So he perfected this sampradaya. इसलिए मध्वाचार्य संप्रदाय को भी पूर्ण कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु. I have just another question regarding the answer to this. So we see that the Tattvavadis, they were following the Sampradaya as you mentioned. So they are sticking to the principles. And we also stress that we should not bring any adulteration to our Sampradaya. Prabhupada quite often stress that. So, but apparently, of course this is true that Lord Chaitanya is not Krishna himself. So apparently, if you see what Madhvacharya did and what we are following now, which was perfected by Sri Chaitanya Mahaprabhu, but there is a difference. So in that sense, we are not exactly following the principles of the Sampradaya. Yes, Gaudiya, Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, it's like separate branch. प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसा कि मध्वाचार्य जो तत्ववादी हैं ये मध्वाचार्य को यथारूप पालन कर रहे थे, और हम सुनते भी हैं कि किसी को भी संप्रदाय में कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए. भले हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो परिवर्तन कर सकते हैं, और लेकिन क्योंकि हम इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं तो हम तो मध्वाचार्य जी के वास्तविक अनुयायी नहीं रहे. Every acharya, he had his mission. तो महाराज ने बताया कि हाँ, हम एक अलग शाखा है, वो शाखा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय. And to fulfill that mission, they were presenting certain philosophy. और हर आचार्य का कुछ एक मिशन होता है और उसे पूर्ण करने के लिए वो सिद्धांत देते हैं. Of course, Madhavacharya, he knew complete philosophy. मध्वाचार्य पूरा सिद्धांत जानते थे. He was a pure devotee. वो शुद्ध भक्त थे. But because he has some specific mission, he was not presenting the whole philosophy. He left it for Lord Chaitanya.
और मध्वाचार्य का कुछ एक विशेष लक्ष्य था, कुछ मिशन था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने पूरा सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए यह छोड़ दिया। All these philosophies, they were building like steps to get to the highest philosophy. ये सारे जो वैष्णव सिद्धांत हैं, ये सीढ़ी के अलग-अलग स्टेप्स हैं, जो कि एक पूरी पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग स्टेप्स हैं, और पूरी पराकाष्ठा है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया। All of them, they were coming to Navadvip. सभी जो संप्रदाय हैं वो नवद्वीप आए। Madhvacharya, Ramanujacharya, Nimbarkacharya, all of them, they came to Navadvip. मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सभी नवद्वीप आए। And they got the darshan of Lord Chaitanya. और सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। And because they knew that Lord Chaitanya will came to propagate the most perfect philosophy, so they presented just one part of this philosophy. और उन्हें पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण सिद्धांत देंगे, इसलिए उन्होंने एक भाग का ही प्रस्तुतिकरण किया, एक भाग ही दिया। That was their service. यही उनकी सेवा थी। Devotee usually does not retaliate. प्रभु जी का प्रश्न है, जैसे कि महाराज ने प्रवचन में बताया कि भक्त तितिक्षु बहुत सहनशील होता है, तो हम भी देखते हैं और उस भक्त को जो तितिक्षु है, उसे भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कई सारी रुकावटों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रभु जी क्योंकि पुस्तक वितरण की सेवा करते हैं, तो बता रहे हैं अपना अनुभव कि हम भी कई बार पुस्तक वितरण की सेवा में कितने ही विरोधी लोगों से मिलते हैं, जो कि हम पे शारीरिक रूप से भी आघात करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमें उन्हें सहन करना चाहिए, या फिर उनके प्रति हमें भी आक्रामक होकर और कुछ करना चाहिए? तो महाराज बता रहे हैं कि कभी भी भक्त कभी भी रिटेलिएट अर्थात कभी भी विरोध नहीं करता है, आक्रामक नहीं होता है। If there is some danger, we can try to protect ourselves. और अगर कोई खतरा होता है तो हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। Because we are not like Haridas Thakur. क्योंकि हम हरिदास ठाकुर के समान नहीं हैं। He was beaten in 22 marketplaces. हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पीटा गया था। So we should not try to imitate great souls. लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। So sometimes, if there is a big danger, we can just run away. But sometimes situation is dangerous and we cannot escape. So we can just pray to Krishna. If he wants to protect us, he will protect. Or like Jesus Christ, he knew that they will kill him. But he also knew if he will do this and they will kill him, thousands and thousands of people, they will accept his philosophy. So that's why he did not try to escape. So if there is some use of what we are doing, we can do it. Otherwise we can just run away. We can stop. Thank you very much. Hare Krishna.